बड़ा जो फैक्टर है डॉक्टर आलिया, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि वो जी क्या है. अच्छा You are a professor in ठीक है economics, जी and you would be able to tell us better. There are many जी factors. One is the Ukraine war, the जी other जी is the जी falling rupees. जी आपका जो जी पाकिस्तान का जो जी रुपए है उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा घट गई है. 30 से 35% अगर रुपए की वैल्यू घट जाए जी तो वो छोटा अमाउंट नहीं है. हम्म और क्या ये सारे मिलाकर एक कॉकटेल बना है फैक्टर्स का, उसकी वजह से पाकिस्तान में ये हालात है, या आपके मुताबिक कोई एक ऐसा फैक्टर हो जो बहुत स्टैंड आउट कर रहा हो, एंड दैट इज द ओनली फैक्टर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर पाकिस्तान्स इकोनॉमिक क्राइसिस? हाउ वुड यू रियली एक्सप्लेन दिस, दैट व्हिच इज द मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर? Gee, unfortunately, here I would give basically a political economy answer that I think it is the interrupted democracy that has been a major factor in causing the present economic crisis. Because although के इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी वो भी कोई बहुत स्टेबल इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री पे नहीं जा रही थी, लेकिन फिर भी कुछ पॉलिसीज जो थी वो पोस्ट कोविड इकोनॉमी की रिवाइवल के लिए बेनिफिशियल साबित हो रही थी. But starting April 11th, I think it was, there has been a huge political crisis, and I think this is the best example of a political crisis feeding into a mega economic क्राइसिस. जब इस की इकोनॉमिक हिस्ट्री लिखी जाएगी तो आई एम श्योर दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी पोर्ट्रेड, एंड इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज द पीपल ऑफ पाकिस्तान are suffering, or I think no citizen of a country should be should have to pay the price for voting in a democratic manner. It's very Really unfortunate. unfortunate to hear this, because Pakistan is a neighbor country and it does have an impact on South Asia. Yes. But ये जो खबरें हैं कि ट्रेनें नहीं चल पाएंगी, इसमें कितनी सच्चाई है कि ट्रेनों के पास ट्रेन चलाने के लिए पैसे नहीं है? तो क्या जो ट्रेन की मोबिलिटी है क्या वो भी रुक जाएगी? उसको कैसे निपटेगी सरकार? के पास प्लान बी क्या है अगर पैसे नहीं है? फॉरेस्ट रिजर्व्स बिल्कुल खाली हो रहे हैं, ट्रेन चलाने तक के लिए पैसे नहीं है, वेडिंग्स और वेडिंग हॉल्स और मॉल्स को ये बोला गया है कि आप अपनी जो लाइट्स हैं उनको आप ऑफ कर लीजिए शाम होने के पहले पहले. तो ये किस तरफ को चीजें जा रही हैं? वेयर आर वी हेडिंग टू एंड वेयर इज इट गोइंग टू एंड, डॉक्टर आलिया? जी जी, ये बेसिकली एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी मेजर्स की तरफ जा रही हैं. इकोनॉमिक पैकेज जो आईएमएफ का है उसको रिवाइव करने की कंडीशनैलिटीज मीट करने के लिए. एंड आई एम सॉरी टू से, लेकिन सारी इकोनॉमिक रिसर्च यही कहती है कि एक्सट्रीम ऑस्टेरिटी मेजर्स जो हैं वो हमेशा एक आम आदमी की ज़िंदगी तो बहुत यानी नेगेटिव इम्पैक्ट उस पर होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स हैं लाइक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स और एक इकोनॉमिक वायबिलिटी और फीजिबिलिटी का जो सिनेरियो है वो not only for the present but for the medium and long term वो इफेक्ट होता है. And I don't think the present government is taking into account all these factors, क्योंकि वो बहुत ही myopic vision के साथ इस वक्त गवर्नेंस कर रहे हैं just to keep themselves in power. And I think that is a very it doesn't serve democracy very well. और लेकिन जो खुशआइंद बात है वो ये है कि जो भी एनालिस्ट्स हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स, वो इस बात को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए. एंड आई थिंक दिस टाइम द आर्मी इज आल्सो वेरी क्लियर कि वो स्टेप इन करके और इकोनॉमी को सेव करने की मूव नहीं करेंगे. सो इट्स ऑल अप टू द डेमोक्रेटिक प्रोसेस नाउ, एज where it goes. एक आखिरी सवाल डॉक्टर आलिया, जिसका कि बहुत शॉर्ट में आप जवाब दीजिएगा, then we'll wind up the show, कि क्या पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी अब होने जा रही है, और we are expecting that it's almost like Sri Lanka? I don't think नीलू के पाकिस्तान का श्रीलंका से जो कंपैरिजन है वो बहुत एक वैलिड कंपैरिजन है, बिकॉज आवर इनिशियल सिचुएशन इज वेरी different. I would say in some cases Pakistan's scenario is actually worse than the Sri Lanka scenario, because we are a
much larger population. We have a lot more inequality, both in terms of development and in terms of opportunities. श्रीलंका की जो ह्यूमन कैपिटल प्रोफाइल है वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. So it's only a matter of time that they overcome their financial crisis and get out of it. इसका बैकलैश डॉक्टर आलिया क्या दिखने को मिलेगा? I think 2023 Pakistan goes to elections, right? Yes. Well, that is being said. जी. But I'm not clear whether that is how the present government is looking at it. Because if they go into elections with this legacy of economic disaster, then, there's very little hope of their coming back into power. And I fear कि वो इसको परपेचुएट करने के लिए, अपनी पोजीशन को स्टेबलाइज करने के लिए और ज्यादा इकोनॉमिक रिस्क्स लेंगे, which are again going to have very disastrous effects on the people of Pakistan. It's really unfortunate to hear that, but you take care of yourself, Dr. Alia Hashmi, and we'll keep coming back to you for more updates as and when the developments happen in Pakistan. Thank you so much. और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, फीडबैक दीजिएगा और देखिए कि पाकिस्तान का ये जो खस्ता हाल है, जो एक सूरत हाल है वहाँ का, डॉक्टर आलिया हाशमी ने हमें बताया है, इसको देखिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और हमारी लाइव अपडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू में बनी रहेंगी. थैंक यू वेरी मच.